Am I audible? Hello. 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 Yes, sir. Yes. It is visible. No? Yes, sir. Okay. So see, this is our discussion in the
previous lecture we solved three numericals, I think, three or four numericals. Now we'll proceed with the same. Yes, can we start now? Hello. सर ये वाले सम को वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल से वर्क करना था ना? हाँ, ओके। आपने डाउट पूछा था, बराबर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये देखो, वर्चुअल प्रिंसिपल लगाना है तो कैसे लगाओगे? यहाँ पे दो सिस्टम फॉर्म होगा, ठीक है। एक ये वाला सिस्टम फॉर्म हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच में, और एक ये वाला फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दो स्ट्रिंग है ना, दोनों स्ट्रिंग पे इंडिविजुअल लगा सकते हो आप, ठीक है। तो पहले वाले के लिए लगाओगे तो टी ए एक्स ए इज इक्वल टू टी बी एक्स बी, करेक्ट, राइट ना? यस सर। यहाँ पे देखो इन दोनों का टेंशन सेम है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स बी और एक्स इज इक्वल टू सर एक्स, समझ गया। समझ में आया? तो लाइक दिस, ओके। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. एक मिनट, हाँ. Can you solve this 5.1.5? See this 5.1.5 सेम तरीके से है, देखो. चलो सॉल्व करो इसको. अच्छा, 5.1.5 में एक करेक्शन कर देना. देखो क्या बोला है, द सिस्टम शोन इन द फिगर इज resist from rest. The coefficient of kinetic friction at contact surfaces are 0.4, means is same everywhere. Okay, this is also 0.4. A and surface and B और surface के बीच का भी 0.4 है. What is the height lost by the bodies A, B and C? ठीक है, in 2 seconds. Also find the tension in the wires. तो यहाँ पे जो ब्लॉक ए का मास दिया हुआ है that is 5 kg, ब्लॉक बी का दिया हुआ है 4 kg, and block A is kept on an inclined plane which is at 30-degree angle, and this block A and B both are connected to the block C with two different strings. Can you see that? Now see, this block C is having mass 15 kg, okay? That is not 150, yeah? That is 15. Please correct it. Is it okay? Hello? Hello? यस सर 15. तो ये सॉल्व कर सकते हो? चलो सॉल्व करके बताओ आंसर मुझे क्या आता है. आई एम गिविंग यू कितना 233 हो रहा है ना, 10 मिनट्स दे रहा हूँ. चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तब तक आप सॉल्व करो. तब तक जिसने सॉल्व कर दिया कर दिया, अदरवाइज सी द नेक्स्ट. अच्छा, is this dependent motion or independent? First of all, the question arises. Dependent है या independent? डिपेंडेंट. डिपेंडेंट. Yes, yes. तो पहले ये आप आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ही स्टार्ट करना सॉल्व करना.
लेके चलो, बोलो ना कुछ। दिया है सॉल्व करने की। Yes, what would be the acceleration here? Will the acceleration will be same for all the blocks, or will it be different? Sir, different. Different? का ये देखो, ये पहला स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या टेंशन आएगा? लेट अस सपोज दिस इज TA, और इसका क्या है? सपोज लेट अस अज्यूम हियर दिस इज TB ना। ये दोनों अलग अलग है ना, ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ, yes, direction of motion. What is the direction of motion? Yes, tell me. This block C will go down, right? Am I correct? Yes, sir. And at the same time, this will go like this, and this will go like this, correct? So I hope this is clear. Then after this, we should mark the tensions in the strings that I have marked, okay? And second step is to find out the relations among the
relations between accelerations of the blocks A, B, and C. What would be the relation here? Can you tell me? See, again ये पीछे वाले प्रॉब्लम के जैसा ही है. देखो, सेम होगा A तीनों. and C, A and C is A, B, connected. and C would be equal. A and C will have same acceleration, correct ना? And B and C again will have same, correct? Yes, sir. They are indirectly connected with the same. So all in together we can say these are all blocks will have same accelerations. That is AC because indirectly they are connected together. ठीक है, सिर्फ वो strings अलग अलग है but indirectly वो अलग अलग नहीं है, एक ही है. So let's say this is A. So that means यहाँ पे एक unknown मिला, that is acceleration सिर्फ एक ही आएगा. Acceleration of the block will be A. Let's say, okay. So एक ही acceleration निकालना है, okay. मीन्स अलग अलग फाइंड आउट करना नहीं है अपने, ठीक है. सारे ब्लॉक का एक ही होगा. And tensions, there will be two tensions का value TA and TB. That means total 3 unknowns, correct? 3 unknowns and we are given with the 3 bodies. So we can frame the 3 equations of motions, correct? So let us start now. Draw the free body diagram. तो ये क्लियर हुआ ना, ये एक्सेलरेशन होगा, इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. So आंसर आया क्या किसी का? देखो ये इंक्लाइन प्लेन पे है, ध्यान देना, ठीक है. ये इंक्लाइन प्लेन पे है, उसके लिए ये हो जाएगा प्लेन, ठीक है. दिस विल बी द प्लेन, ओके. एंड नाउ you can resolve it. This will be the weight. कितना हो जाएगा? 5 into 9.81. ठीक है ना? Are you getting? This will be 5 into 9.81 कितना होता है? करके देखो जरा. Yes. 49 point क्या होता है क्या? Hello. Hello. I'll write like this only. 5.9181. This is the 30-degree angle. So ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. So this will be sine of 30. ठीक है ना? Are you getting? And this will be 5 into 9.81 cos of 30. ठीक है. तो टेंशन 10.51 है. एक मिनट आप देख के बताओ. और इसका जो और कौन सा फोर्स आएगा? नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना. Let's say this is N1. Are you getting me? Since it is moving in what? Downward, right direction. So frictional force will be here, like this. This will be 0.4 and 1. Correct? So this is free body diagram. That's 3D of block A. हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? टेंशन का वैल्यू नहीं सर, वो mg sin थीटा कंसीडर नहीं किया था, इसलिए सर रॉन्ग होगा वो. हाँ, इसलिए वो प्रॉपरली करो, थोड़ा गड़बड़ मत करो, आराम से करो, ठीक है. सर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है मतलब? 5 point. Acceleration is 5.791 something. यस सर, हाँ कर. Now apply the equations. Summation fx is equal to nax and
summation Fy is equal to MAY. तो यहाँ पे आपको मिलेगा using block A, you will get N1 minus, sorry, this will be N1 minus, पहले summation Fy कर देते हैं हम लोग, N1 minus, this will be 5 into 9.81 into cos of 30 is equal to 5 into, this will be 0 because it is not performing any motion in y direction. So N1 will be 5 into 9.81 into cos 30. This will be around, I think, 42 point, 42.47. yes, 42.479. And now this will be here. This will be, ये क्या होगा? अच्छा, इसमें टेंशन नहीं दिखाया हम लोगों ने, टेंशन भी आएगा ना? टेंशन इन द स्ट्रिंग आल्सो विल कम हियर ना? तो टेंशन कैसे आ जाएगा? Since I have drawn this weight का component here, तो टेंशन में यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? This is the tension, okay? By using principle of transmissibility of forces, I can show anywhere ना? या फिर यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है? This is my TA, okay? So this will be TA minus 0.4 into N1, okay? Plus 5 into 9.81 sine of 30, right? Are you getting? Yes, sir. Equal to, this will be 5 times acceleration. So I think this will be TA minus this 0.4 into N1 किया 42.479 और ये पूरा अगर किया तो कितना आता है? 7.533. 7 plus 7.33 ना? 33 is equal to 5A. This is your equation 1. Okay. Now consider the block B. सर हाँ, उधर जैसे हमने फोर्स पैरेलली ट्रांसमिट किया वो करते हुए हमें मेंशन करना होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ नहीं, ट्रांसमिसिबिलिटी. no, no need, because it is understood. वो समझ जाएगा, ठीक है? There is no need to mention that. You can directly do, okay? FBD of block B. Okay, this is block B. So what will be here? This will be the weight 4 into 9.81. This is the direction of motion. यहाँ पे आ जाएगा tension, that is TB. And since it is moving in this direction, so frictional force will be there and normal reactions. This is N2. This will be 0.4 into N2. Correct? Abhi, using FBD of block B, you can write summation Fx is equal to MAX, and that's why you can write TB minus 0.4 N2 is equal to 4 into A. Correct, no? And summation Fy is equal to MAY, that is N2 minus 4 into 9.81. See, here I am using Newton's second law of motion, so don't confuse. अगर मैं डीएलएम्बर्ट्स लगाऊंगा तो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स मेंशन करना कंपलसरी है और उसमें डायग्राम में दिखाना भी कंपलसरी है फ्री बॉडी डायग्राम में, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स. सो दिस विल बी 4 into 0, okay? So simply you will get N2 as 39.24 Newton, and if you substitute here this N2, you are going to get TB
minus 0.4 into this, that will be 15.696 आता है ना? Yes, sir. That is 4a. Okay, this is equation number 2. So this was equation 1. This is equation 2. C है, C पे क्या आएगा आपका? C पे दो टेंशन आएंगे और रेट आएगा बस, ठीक है? Let's have third equations. Let me draw here. This is my C. Okay. तो C पे क्या आ जाएगा आपका? दो टेंशन, that is TA and TB. Okay, and its weight, that is 15, na? 15 into 9.8, and this is going downward. So here you can apply summation Fy only. Okay, summation Fy is equal to MAY. That is TA minus T, sorry, minus TB plus 15.981 is equal to 15 into A. Correct, na? 15 into na? 15 into 9.8. ठीक है ना? And this is how much? TA plus TB is equal to, sorry, TA is equal to TA plus TB plus ये कितना आता है? 147.15. 1 47. 147.15. राइट, ये इस साइड दिया तो माइनस हो जाएगा ना, एंड दैट इज इक्वल टू 15A. करेक्ट है ना? Yes, sir. सर -15 है. -15 आएगा सर. एक मिनट ना, एक तरफ मिनट. समझिए. ये माइनस TA और ये माइनस TB और ये प्लस 147.1 ये आता है ना, ऐसा आता है ना? हाँ सर, ये भी राइट है. Like this only, okay? No need to confuse. This is equation 3. Solve the equations 1, 2 and 3. What we will get? 5.79. 5.79. 5.791 meter per second square. This is your answer. और क्या पूछा है? और क्या पूछा है प्रॉब्लम में, बोलो. टेंशन का वैल्यू पूछा है ना. सो टेंशन इज, टी का वैल्यू चेक करो, 21.42 आता है. 21.42. Yes, correct. AB is 38.86. 38.88. correct. What else is asked in the question? और क्या पूछा है? What else we are expected to find? System is released. What is the height Distance loss? travel. हाँ, तो हाइट लॉस मतलब देखो, अभी ये सिंपल सी बात है. यहाँ पीछे आ जाओ डायग्राम में. एक मिनट, इट नीड योर ऑब्जर्वेशन. अभी मुझे बोलो, ये ब्लॉक सी, पहले ब्लॉक बी लेते हैं. तो ब्लॉक सी जब नीचे जा रहा है तो ब्लॉक बी इसके ऊपर यहाँ वहाँ स्लाइड होगा, ठीक है? तो इसमें ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है? तो यहाँ पे हाइट का क्वेश्चन ही नहीं आता है ना? देयर इज नो हाइट लॉस, करेक्ट, फॉर बी ना, राइट? सी फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे बॉडी बी क्या हो रहा है, यू कैन राइट लाइक दिस, बॉडी बी विल मूव along the horizontal plane, right, by some distance, by same distance which the block C will be.
but just a minute. Hello. Sorry for the disturbances. Am I audible? Hello. आवाज आ रहा है? यस Hello. सर। हाँ, ये देखो यहाँ पे जब ब्लॉक सी मूव करेगा नीचे के डायरेक्शन में, तो सिंस दिस ब्लॉक सी इज कनेक्टेड टू बोथ ए एंड बी ना, तो ब्लॉक सी जितना भी डिस्टेंस मूव करेगा ये दोनों भी उतने डिस्टेंस मूव करेगा, करेक्ट? तो यहाँ पे सी, जब ब्लॉक सी मूव करेगा तो ये बी और सी का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, राइट ना? लेकिन ये बी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होने की वजह से इसका कुछ भी हाइट क्या होगा, लूज नहीं होगा, ठीक है? तो पहला हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ब्लॉक body B will move along the horizontal plane by same distance. Okay, and you know why? Due to disconnected with C. Okay, but it will not lose the what height, right? So this is the first answer. The body B will not lose. Are you agree with this? Hello, hello. यस सर, हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे। Yeah. अभी सेकंड जो है क्वेश्चन में कि A का हाइट कितना लॉस होगा, okay? बॉडी C और A का कितना होगा वो दोनों का निकालना पड़ेगा। तो C के लिए कैसे करेंगे? लेट अस सपोज ब्लॉक सी का हाइट कैसे निकालेंगे, और कितने टाइम में बोला है उसने? 2 सेकेंड्स में 2 बोला है ना। सेकंड्स। तो क्या कर सकते हैं अभी? और सेकंड इक्वेशन न्यूटन। या सी, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट ना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, दैट मीन्स u is given, that is 0, and t is also given, that is 2 seconds. So we can use s is equal to ut plus half at square, and we know that what is s, that is the distance covered by the body C, that is, let's say, h, okay, hc, that is height covered by the body C, okay, and u is what, 0 into 2 plus half, and acceleration just we calculated, that is 5.791 into 2 square. So this 1 2 will cancel. How much we are going to get? Yes, 11.58। 11 point, एक second, हाँ 11.58, 11.582 meter. Yes, so this is nothing but the height, okay, for body A, means distance covered by the body C, okay. तो ये इतना distance cover किया. Now you tell me, okay, hello, hello, ये इतना distance covered किया, that means this same distance will be nothing but the height lost by the body, C, correct ना? Or block C, can I say? Hello, यस सर। no, for body A what you will do? Body A का कैसे आएगा अभी? सर वो स्लोप में डिस्टेंस कवर करेगा। Yes, it is on slope ना, तो slope पे है तो कैसे आ जाएगा? डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 30 डिग्री पे है, ठीक है, ये 30 डिग्री पे है, और अभी सपोज ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो लेट सपोज एट अ इंस्टेंट ये जब 11.52 है, तो मतलब सपोज ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ,
ठीक है, ऐसा कुछ, राइट। और ये डिस्टेंस अपने को पता है 11.52 पे है, ठीक है। तो कितना हाइट लॉस हुआ, ये एंगल पता है अपने को 30 डिग्री, राइट ना। तो sin 30 is equal to, we can apply here, sin 30 is equal to what, let's suppose this is HA, this is HA and divided by 11.582. So we can find out the height lost by the body A. Are you getting me? Yes, height lost by block A, that will be HA is equal to 11.582 sin 30. If you want, you can directly write, no need to show, okay. अगर दिखाया तो भी चलेगा. So this will be half of this. Sin 30 is half, ना, तो half मतलब 5.79 ही हो गया. Are you agree? Yes, sir. Yes, sir. Thanks. Okay, for this problem. So this was the next problem. Okay. Again, it was based on dependent method. Now let's have a next numerical. एक second. So similarly 5.1.6 भी आप कर सकते हो, okay, and then 5.17. Before 5.17, let's have a 5.1.8, okay, 5.1.8. Can you see this problem? Just read it. Two blocks A and B are held on an inclined plane 5 meter apart. Okay, for A, mu is given as 0.2 and for B, mu is given as 0.1. If the blocks begin to slide down the plane simultaneously, okay, calculate the time and distance traveled by each block before collision. Okay. So let me explain you this problem. Specifically मैं बताता हूँ आपको कैसे है. तो कैसा है, इसमें क्या बोल रहा है देखो. This is something like this. Okay. यहाँ पे आपका ब्लॉक बी है, ठीक है. और यहाँ पे ब्लॉक लेट्स से ए है, ठीक है. और इन दोनों के बीच का जो गैप है, दिस इज गिवन टू अस. This is how much? This is 5 meter, na? 5 meter, right ना? And यहाँ पे एक पॉइंट दिया है जहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे आके ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है. This is the point where they are colliding. Position point, correct ना? Position point. This is what? यहाँ पे collision होता है दोनों का. Position point. और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे है. ये गैप दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना है. दिस इज डी, ठीक है. दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक ए, ओके.
and this value is mu is equal to 0.1. This value is 0.2. Okay. And what is the angle given? Hello. Sir, 20 degree. Now the blocks A and B are starting at the simultaneous. Okay, and they are what? They are begin to slide down simultaneously. So we have to find the time and distance traveled by each block before the collision. तो collision होने से पहले कितना distance cover करेंगे दोनों, ये निकालना है. ठीक है. Now here we'll assume that block A and B are of same masses. Okay, let's have not given, तो यहाँ पे assume कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे assume करो the mass of the block I think there is no need to assume also. Okay, it can be solved without assumptions because that mass ka term I think cancel. Okay, so no need to assume. We'll see. Okay, let's see. देखेंगे क्या हो. So did you understand this problem? क्या करना है अपने को? हेलो, ये दोनों भी ब्लॉक क्या हो रहा है, नीचे स्लाइड हो रहा है, simultaneously begins to slide in this direction. Okay, in which directions? This directions. Downward बोलेगा. And we have to find the distance and the time covered before the collision. Collision यहाँ पे होता है, जो कि यहाँ से d distance पे है. ठीक है, यहाँ पे आके दोनों कोलाइड हो जाते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, अभी यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से क्या होगा, अगर सपोज मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर तो आपको क्या दिखेगा, ये ब्लॉक अगर बी यहाँ पे है, ठीक है, अगर ये ब्लॉक ए इधर है, ठीक है, और यहाँ पे कोलिजन हो रहा है. ठीक है, लेट्स से मैंने एज्यूम किया कि बिफोर कोलिजन ये ब्लॉक ए जो है यहाँ से, ठीक है, हेलो, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ डी. करेक्ट, ये डी जो कि दिया भी है प्रॉब्लम. ठीक है ना, डी, और इसके बीच का गैप कितना है, 5 है ना, 5 है कि नहीं. तो बी कितना कवर करेगा बिफोर कोलिजन्स, कैन यू टेल मी? 5 plus d. Yeah, this will be d plus 5 or 5 plus d, you can see. So this should be very clear first. तो यानी कि अपने पास S for block A is given, okay, that is d meter. S for block B is given, that is d plus 5 meter. Okay, and time is t seconds. Let's see. And they are starting from west, so u is 0. है ना, starting from west, so they, of course they will start from west. That means again we can apply here S is equal to ut plus half at square, kinematic rejection for block A and for block B. Correct, no? Are you getting me? And similarly SB is equal to ut plus half AB t square. But to apply these equations we have u, we have suppose t. Okay, we don't know A, we don't know A, means acceleration of this block A and acceleration of this block B. अगर हमारे पास acceleration of block A और acceleration of block B आ जाता है, anyhow, then we can apply this equation and we can say at the point of collision both the blocks will be what, at the same locations. So we can equate this SA and SB, and then from there we can find out. Are you getting me? Hello. So this will be the approach. Hello. Are you getting me? Yes sir. सर मास को इक्वल लेना है कि इक्वल लेना है? आई थिंक हम अभी सॉल्व करेंगे ना, हमको खुद ही समझ में आ जाएगा. देखो अभी हम सॉल्व करते हैं.
मास का मेरे को लगता है नो नीड टू अज्यूम, जो मास है ना उसको ऐसे ही रखेंगे, m के टर्म में रखेंगे। आई थिंक दैट विल गॉन, ओके, दैट विल कैंसिल हो जाता है आई थिंक इक्वेशंस में, क्योंकि दोनों साइड मास मास आएगा एंटायर। आर यू गेटिंग मी? हेलो। यस सर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये बताना है आपको कि ये प्रॉब्लम जो है 5.18 ये डिपेंडेंट मोशंस है या इंडिपेंडेंट? सर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड बॉडीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, ओके। नाउ जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड फटाफट स्टार्ट करो। तो इसमें देखो ये प्रॉब्लम के अंदर यू विल फाइंड काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों कंबाइन है, ठीक है ना। यहाँ से हम काइनेटिक्स एनालिसिस करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, एंड देन वी विल डू द काइनेमेटिकल एनालिसिस, विल फाइंड आउट द मोशन पैरामीटर्स। समझ में आया ना? तो ऐसा भी न्यूमेरिकल्स हो सकता है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हो गया आपका ब्लॉक ए, ओके। पिछले केस के जैसा हो गया, ओके। आप फिर से यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है। दिस विल बी द वेट, this will be the component for weights, okay. This is direction of motion, this is 20 degree, so this will be mg sine of 20, this will be mg cos of 20, okay, and this will be normal reaction, that will be n1, and this will be the frictional force. I hope अभी आपको ये थर्व हो गया है, 0.1 into n1, correct ना? Correct है? This is FBD for block B ना, B का मैंने बनाया, B का हो गया, ठीक है। ब्लॉक ए का क्या होगा, वैसे ही ड्रॉ करना है ब्लॉक ए का। This is my plane, again this is my plane, right? Hello, this is mg, correct. This will be mg sine of 20 again, and this will be mg cos of 20. This angle will be 20 because this is 20, okay. Again frictional force आएगा, that will be 0.2 times of n2. Let us assume this normal reaction as n2, correct ना? This is FBD for, are we getting me? FBD for block B. Hello, hello. यस सर। Now use the Newton second law of motion. Using Newton second law of motion, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसके लिए अप्लाई करता हूँ, that is summation fx. Let us assume first summation fy is equal to may, because वहाँ से n1 निकल जाएगा ना पहले. This will be n1 minus mg cos of 20 degree, that will be equal to I think m into this is 0 ना, तो n1 कितना आता है, n1 is mg cos 20, right, and then summation fx is equal to 0, okay,
sorry, MA, x not 0. So you will have mg sine of 20, okay, minus 0.1 n1, correct, no? Is equal to mass times acceleration of block B, correct, hai? Correct, hai? Substitute the n1 here. So mg sine of 20 minus 0.1 into mg cos of 20 is equal to m times AB. See here m is cancelled out throughout, no? And g we know that. G ka value we know that is 9.81. Okay. Find out the AB. AB directly निकल के आएगा यहाँ से. Tell me the value of AB. Sir, 2.43. 2.43. Very good. 2.433 meter per second square. This is the value of AB. Okay. So यहाँ पे note कर लो. यहाँ पे note down करो. AB is 2.433 meter per second square. हो गया? सबको मिला ये? In similar way, you carry out the analysis for block A. So you will get AA. Okay. Sir, 1.51 आएगा ना? Yes, sir, 1.51. एक मिनट. Summation fx is equal to max, that will be mg sine of 20, okay, minus 0.2 n2, okay. ठीक है ना, इतना ही है ना, और कुछ है ब्लॉक ए के लिए नहीं है ना, m into a, ठीक है. Now summation fy is equal to may. This will be n2, which is equal to mg, n2 minus mg cos of 20, that is n times acceleration is 0 in y direction. So n2 will be mg cos 20. So this you will put here. You will get mg sine of 20 minus 0.2 times mg cos of 20 is equal to MAA. M will cancel out. What is value of A? 1.51. It's 1.511 meter per second square. So these are the accelerations. Okay. Indirectly problem में उसने डायरेक्टली पूछा नहीं है एक्सेलरेशंस का वैल्यू, बट इनडायरेक्टली वो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि without accelerations we cannot find out this time and distances traveled, okay, by the blocks. Clear to you? Now let's carry out the kinematic analysis. So for motion of block A, and here let us consider the motion of block B. They are both are performing motion with uniform acceleration motion because acceleration is constant. So यहाँ पे S is B, T is T, acceleration of A is 1.511 meter per second square. Here
S is d plus 5. Okay. T is t. Acceleration of block B is 2.433 meter per second square. Am I correct? Yes, sir. Right here, the equations SA is equal to UT plus half AAT square. U will be 0. U will be 0 here. Okay. यहाँ पे ये चला गया, that is half into 1.511 t square. So this is how much? I think this is 0.756 t square. Let's call it as equation A. And similarly here you can have ut plus half ab t square. So this will be half into 2.433 t square, and this will be d plus 5. This is d. This is d. Okay. So how much is d? I think this is 1.217 t square minus 5. Check it. This is b. Correct? Eh? Now from A and B, we can get T as well as D. And D will be nothing but distance covered by the block A. And once you got distance covered by block A, you can find out distance covered by block B before collisions. This will be your answer. चलो बताओ कितना आता है? सर D 9.12 है. नहीं, रॉन्ग है. T का वैल्यू कितना है आप ये बताओ. सर 3.29. हाँ, T is correct. 3.293 seconds. What is this? कितना आता है D? Yes. 8.177. हाँ, 8 point something आता है. 8.197 I have. Just check it. And this is therefore 13.197. So this is your final answer. This is your final answer. Okay, so I hope you got it. ठीक है, समझ में आ गया? Hello. Yes, sir. So this is the way how we do the kinetics का problem using Newton's second law of motion and D'Alembert's principle. तो कोई भी प्रॉब्लम लेने तो यही करना है, ऐसे ही करना है, यही स्टेप्स में आपको जाना है. सिर्फ आपको पहले सॉल्व करने से पहले क्या देखना है, कौन सा मोशन है. डिपेंडेंट है तो जो मैंने स्टेप्स बताया वो स्टेप्स में जाना है, और इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के यू कैन सेलेक्ट योर मेथड, न्यूटन सेकंड लॉ या D'Alembert's, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग. ओके, so this I can say here our first kinetics part is over. Okay, kinetics part 1, that is Newton's second law of motion and the D'Alembert's principle is covered. Rest of the problems you can try at home as a homework. Okay, all the problems, all the types of variation, maximum variation जितना था cover कर दिया. In engineering mechanics
आप जितने भी प्रॉब्लम्स करोगे वो कम ही लगेंगे, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ओके। जितने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे ना उतने उतने नए कॉन्सेप्ट्स आपको थरो होते जाएंगे, ठीक है। So maximum possible variations we have covered. We have covered all the classwork problems. Now 5.1.7 का problem जो है देखो एक बार, वो आप होमवर्क में जरा ट्राई करना. Can anyone tell me what will be the situation in this problem? The 400 kg mine car is hoisted up the plane by using a cable and a motor M. Okay. The force in the cable is given F is equal to 3200 T square Newton. See here, F is given, but it is not a constant force. It is a variable force because it is given as a function of time. Right now, are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. If the car has initial velocity of 2 meter per second, determine the distance it moved up the plane after t is equal to 2 seconds. तो कुछ नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, फ्री बॉडी डायग्राम करेक्ट बनाना है, ओके। एंगल करेक्ट फाइंड आउट करना है जो इंक्लाइन प्लेन का है, स्लोप भी दिया है देखो, ठीक है। नाउ फोर्स इज गिवन वेरिएबल ना, तो आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए, एम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है ना, ये आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन का प्रॉब्लम होने वाला है। आर यू गेटिंग मी? हेलो। सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है या पर सेकंड अलग फोर्स निकाल के करना पड़ेगा? नहीं, पहले आप क्या करोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ब्लॉक्स का, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। स्प्रिंग में टेंशन आएगा, इसका इंक्लाइन प्लेन पे जो ये आपका कार है, वो कार का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ठीक है। उसके वेट्स के कंपोनेंट्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड देन दिस मास m इज गिवन, उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम आएगा, ओके। देन आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, कैन यू टेल मी? अप टू फ्री बॉडी डायग्राम यू विल फाइंड इजी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? हेलो, यहाँ तक सबको आएगा ना? उसके बाद क्या करोगे? Yes, sir. यस टेल मी। फर्स्ट सेकंड के लिए इंटीग्रेट फोर्स करेंगे। निकाल के उसका एक्सेलरेशन निकाल लेना, फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस इन द फर्स्ट सेकंड, और फिर वैसे ही डिस्टेंस इन द सेकंड सेकंड को निकाल के ऐड करना। ओके, सर इसमें वेलोसिटी दिया है, तो एक्सेलरेशन निकाल के। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे करोगे। यस सर F इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे, ए को डी बाई डी टी लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2। yes, correct. So I hope you can do it, okay. And the way in which you are saying na, I think you can do it, okay. You will find it easy, just you need a try, okay. आप एक बार ट्राई करो। आंसर बता दो ना, मतलब वेरीफाई करने के लिए। ओके थैंक यू सर। एक मिनट थैंक यू बोलो, लेकिन रुको थोड़ा, ओके। जस्ट अ मिनट। एंड सर ये आंसर काइनेटिक्स चैप्टर आएगा मतलब टर्म टेस्ट 2 में? हाँ, नहीं टर्म टेस्ट 2 में नहीं आएगा, फाइनल एग्जाम में है ना क्या। सर? हाँ नहीं, टर्म में टेस्ट 2 आएगा में ना? नहीं आएगा, टर्म टेस्ट 2 फ्रिक्शन, में नहीं आएगा। आईसीआर एंड इक्विलिब्रियम, ये 3 टॉपिक्स ना? हाँ, आईसीआर, इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन, यस। ओके। सो आंसर तो मैं आपको देता हूँ, एक मिनट, हाँ जस्ट वेट करो, एक मिनट। तो इतना आपके लिए हिंट है कि ये प्रॉब्लम जो है आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन का प्रॉब्लम बन जाएगा, ओके। एंड यू कैन इंटीग्रेट एंड सॉल्व। एक सेकंड। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट with the kinetics part 2, that we will use work energy principle to solve the problems, okay. तो अभी हम अगला मेथड पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, that is work energy principle method, okay? This was the first method, that is D'Alembert's। एंड ऐसा नहीं है ये जितना प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए ये सिर्फ इससे ही होगा, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बट फॉर दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड दैट कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड D'Alembert's प्रिंसिपल विल बी easier for analysis, okay.
तो ऑप्शन आंसर में तो मेथड का ऑप्शन नहीं होगा ना, मतलब अगर नहीं स्पेसिफाई किया तो फिर उससे ही करना पड़ेगा ना, और नहीं हाँ किया तो अगर फिर कोई भी चलेगा। हाँ हाँ अगर स्पेसिफाई किया है तो वही मेथड से करना पड़ेगा, नहीं किया है तो यू कैन यूज एनी मेथड, बट यू हैव टू मेंशन देयर कि यू आर यूजिंग व्हिच मेथड. ओके, सो योर आंसर इज 5.43 मीटर. 5.43 मीटर. और जो वेरिएबल एक्सेलरेशन आपको मिलने वाला है वो भी मैं आपको चाहिए तो दे देता हूँ, सहूलियत हो जाएगा आपको. जो आपको मिलेगा दैट विल बी यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस. So you will get acceleration as a function of time here because force is as a function of time, and then you can use dv by dt ना यहाँ पे, right ना, and then इसको यहाँ पे ले जाके फिर 8t square minus 4.62 dt, बट यहाँ तक पहुँचना है आपको, ठीक है, कैसे आया हो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से 2 तक, ठीक है. तो you do this, okay, you get this is equal to 5.43 meter. This is your answer, ठीक है. हेलो, यस सर। so do you have any doubt? Shall I stop now? ओके सर, बाय सर। Okay, fine. So from next week we will have offline lecture. Okay, we will meet face to face and then we'll discuss the next parts. अभी हमारा सिर्फ दो ही टॉपिक बचा है, ठीक है, kinetics 2 and kinetics 3, that is work energy principle and impulse momentum principle. After that syllabus will be concluded. Okay? Just wait, let me take the attendance. Okay, thank you. Now you can leave. Bye.